अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम करंट अफेयर्स के लेसन के साथ आपके साथ हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर्स के हवाले से इंतहाई अहम 30 MCQs को देखेंगे। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। पहले MCQs हमारे पास है कि इस वक्त करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है। द करेक्ट आंसर इज़ जस्टिस उमर अता बंदियाल। दूसरा MCQs है कि पाकिस्तान आर्मी को ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 के मुताबिक क्या रैंक दिया गया है। तो पाकिस्तान को जो रैंक दिया गया है वो 9th है। आप इसको पूरा तफसील और डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं, ये आपके पास मौजूद है। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या रैंक है, तो वो 140 रहा। आगे पाकिस्तान नेवी ने कराची के अंदर कौन सी नेवी के साथ जनवरी 2022 में ड्रिल्स की, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी। नंबर 5, हु वन सर गारफील्ड सॉबर्ट्स ट्रॉफी 2021 की ट्रॉफी किसने विन की, तो शाहीन शाह आफरीदी करेक्ट आंसर। नेम द पाकिस्तानी बॉक्सर हु विन्स अरेबियन सी चैंपियनशिप टाइटल, द करेक्ट आंसर इज मुजफ्फर खान। Who is the current chairman of HEC? Correct answer is Dr. Tariq Banouri. Number 8. Who is the first Pakistani transgender doctor in the history of Pakistan? The correct answer is Sarah Gill. Number 9. On January 17, 2022, a special technology zone STZ was inaugurated in Desh. The correct answer is Haripur. Justice Ayesha Malik, before taking the charge of the judge of Supreme Court of Pakistan, has served as a judge in which court? The correct answer is Lahore High Court. तो ये जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली खातून जस्टिस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। Justice Ayesha Malik took oath as a Supreme Court judge and formally became the country's first ever female judge on, the correct answer is 24th January 2022. 24 जनवरी 2022 को जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट की बनी। Muhammad Rizwan has been awarded as the Laureate of T20 Cricketer of the Year 2021. 13. Which Pakistani women cricketer had been named Emerging Cricketer of the Year 2021. Year 2021 की Emerging Cricketer का नाम किसे दिया गया, तो वो है फातिमा सना। The Daesh government has signed memorandums of understandings with 44 foreign investment companies, attracts $8 billion investment at Dubai International Expo 2020 on January 16, 2022. That is KP. Well, which central bank won the IFN Global Award 2021 for promoting Islamic finance across the world? इस्लामिक फाइनेंस को फैलाने के लिए किसने ग्लोबल अवार्ड जीता, वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। Which country is going to host Asian Taekwondo in November 2022? यानी इसी साल के नवंबर के अंदर 2022 में एशियन ताइक्वांडो होने वाले, जैसे कि पाकिस्तान, करेक्ट आंसर पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। 17. Karot Hydropower project under construction on river, correct answer is Jhelum River. Jhelum River पर Karot Hydropower project construction में है। Pakistan ranked as the Daesh worst passport for international travel in 2022. The fourth worst passport for international travel in 2022. 19. Which country will give its nationality to foreign investors? यानी बैरून ममालिक के जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको कौन सा मुल्क नेशनलिटी देगा, तो the correct answer is Pakistan. Which country assumes the G77 chair on January 14, 2022?
यानी जनवरी 14-20-22 को, तो वो है पाकिस्तान। Pakistan has chaired G77 before 2022 for how many times? 3 times. यानी पहले पाकिस्तान 3 दफ़ा इसे चेयर कर चुके और अब 4 टाइम्स किया इसे। जस्टिस उमर अता बंदियाल to take oath as 28th Chief Justice on Feb 2, 2022। अच्छा, इसमें डेट भी आ गई है कि Feb 2, 2022, फेब के अंदर 2 तारीख को उन्होंने हलफ लिया और 28वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट्स रिपोर्ट 2022 by the World Bank forecast dash growth rate for Pakistan in the current fiscal year 2021-2022 3.4%। तो ये वर्ल्ड बैंक की फोरकास्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ है 3.4%। When Pakistan reached the milestone as a country where 100 million people has been administered at least one dose of COVID-19 vaccine। 11 जनवरी 2022, 11 जनवरी 2022 को पाकिस्तान ने यह हदफ पूरा किया कि 100 मिलियन के करीब लोगों ने कोविड-19 की कम से कम एक डोज लगवाई। Who will host ICC Champions Trophy 2025? 2025 के अंदर आईसीसी चैम्पियनशिप की ट्रॉफी को कौन सा मुल्क होस्ट करेगा, मेज़बानी करेगा? तो वो है पाकिस्तान। करेक्ट आंसर। पाकिस्तान बोर्न सर्जन अमंग टीम हु मेड हिस्ट्री विद टेस्ट टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। इंसानी दिल का जो ट्रांसप्लांट किया गया तो वो किसके दिल के साथ किया गया? पिग यानी खिंजीर के दिल के साथ। वेल, name the Pakistan-born surgeon among team who made history with pig to human heart transplant। जिन डॉक्टर ने पाकिस्तानी बोर्न है मिल के ये काम किया वो हैं डॉक्टर मोहम्मद मुहियुद्दीन। 23 persons found it dead inside vehicles in Murray recently। The reason of death is carbon monoxide। Pakistan acquires USD billion loans in fiscal year 2020-21। तो पाकिस्तान ने कितना कर्ज लिया डॉलर्स की सूरत में? तो 15.32 बिलियन डॉलर्स लोन पाकिस्तान ने पिछले साल लिया। When Pakistan reported its first confirmed case of the Omicron variant of COVID-19? The correct answer is 13th December 2021। तो ये हमारे पास करंट अफेयर्स के 30 इंतहाई अहम MCQs थे। तो इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह के MCQs के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो आप हज़रात से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।